Yes, students, can you view my screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Yes, Now, ma'am. so this is the very first program that I had explained you. This was the program for reading an integral value, and ultimately the program was terminated with the help of the stop statement. And within the functionality of the stop statement, I already had mentioned the concept of halt bit. Now, in between, I would like to include the right statement, though already I have explained, but still I would like to include the right statement. The function of the write should be to display the data. It will pick up the data from the accumulator register and it will display it on the input output console. So we have written a machine instruction. We are calling it as the machine instruction write. You can observe that initially it is not in green color. Why it is not in green color? Due to the reason, because in the backend we have not specified its functionality in the form of the micro instructions. So to make it work, what we need to do? We need to go to modify, and we need to go to machine instruction box. Here we need to create a new instruction named as write, as we have given in the assembly language code. Exactly same spelling we have to spell out here, right? So click on it and then write statement. We are talking about write. um, Fine. So this is right, but this is right. Now again, there are the in order to make it work, we need to specify its instruction format with the help of this format option, and then we have to need to write down its the code of the micro instruction to make it work. And again, in order to specify the instruction format, we need to drag this OP code and drop it here. And afterwards, as it will not take any data, it will not take any data from the memory. Rather, what it is going to do, it will display the data picked up from the accumulator register, and ultimately it will display to the input output console. So that is why we have to drag this field unused of the size 12 bits, so that it's 12 bits that will remain unused, that could have been used to bring some of the data from the memory. As here we are not going to bring any of the data from any specific address from the memory, that is why these 12 bits will not work as the address bits. Rather, these 12 bits will remain unused. So this is the instruction format that consists of essentially two components: OP code. 4 bits have been assigned to the OP code. 12 bits here in this case have been assigned to unused. Unused again means here we are going to ignore these 12 bits to be used for some specific purpose, right? Otherwise, in case we have to pick up the data from the memory from some specific location. So we could have dragged this address field here as a part of this instruction format, but here we have used the option unused. Now we switch on to the implementation. We have to write down its corresponding micro instructions in order to make write work. And what is the functionality that we would like to define associate with the write statement? We want write statement to display the value to be extracted from accumulated register and to display it on the input output console. So where we need to, here we are going to talk in terms of input output value. So come to the right hand side and click on input output, double click on input output, and here we have to click on new. And then what actually we are doing, we are simply redirecting the value from accumulator to the input output console. This is again a mnemonic name given by the programmer. So here we are writing down output. Any name you can give, it is a user defined name. I am giving output. And this is the name only that we have given. And now come to the this right hand side, the type of the data we are talking in terms of integral value. So this is the integral data, and from which of the register data needs to be extracted. AC is the register from where the data needs to be taken, because
आपने जो रीड कराया, रीड कराने के बाद डेटा आपका एक्यूमुलेटर में गया. नाउ यू वांट कि जो एक्यूमुलेटर में गया वो वाला डेटा जाकर it should be displayed on the input output console. And so here, from here, you have to choose the option output. Now we have done all the settings corresponding to the output statement, corresponding to the statement that it's going to take the output from AC accumulator register and is going to redirect it to the input output console. Now click on OK. Fine. Now again click on input output option and click this AC to output and drag it to the this window for the write statement, window for writing down micro statements, micro instructions for write machine instruction. Now we need to write down AND. In order to terminate it, click on this AND option and drag it to the this dialog box. And now we have done with the write statement. We have done with the micro instructions written for the write statement. Click on OK. And now see, next time it will be write statement will become also green. Have you observed that write statement now has become green? Why it has become green? Because in the backend we have specified its corresponding functionalities. Now we need to execute it. Bring the cursor to the very first statement and then come to execute and reset everything. Reset the function of reset everything. I already told you some of the garbage values or intermediate values are stored in some of the memory locations or in some of the registers. To make these values equivalent to 0, you need to reset everything. And now you have to assemble and load. Assemble and load means, again we are talking in terms of this machine instruction. It will assemble, it will translate the entire program in terms of zeros and ones, and it will place it in the main memory in terms of zeros and ones in terms of machine language. So I'm clicking on assemble and load. Save file, it is asking we need to save the file. I'm saying yes. Now assemble and load. Now you can come to it. You can view that the binary coded value of the read instruction is all zeros. Binary coded value of next instruction, it is for write, it is 0010 and then all zeros. Again we come to the next, for the stop statement we can view that it is 0001. So the system is all automatically generating its binary values. Now we need to execute this program. We have assembled and loaded in the main memory. Now we need to execute. Again, bring the cursor to the very first statement and then run it. See, run it means automatically I am not here using the debug mode. Directly I have come to the run statement, and 45 says some value I have given. As and when you click on the enter, you have to observe that this value will go to AC register. Why? Because we have given this functionality in the read statement, that as and when we will input some of the value, it will go to the AC register, and the write statement will pick up that value from AC register and it will display it on your input output console. I'm clicking on enter. Now you can view that it has worked successfully. Now the data, which data we have inputted, 45 value we have inputted, it has gone to AC register with the help of the read statement, and ultimately with the help of the write statement, it has picked up the value from the accumulator register and it has displayed on input output console, and ultimately the system is halted with the as and when the stop statement is met. So this is all about you how to write down read statement, write statement, and eventually the stop statement. Now we are talking about the addition of two numbers. This is your next program. So again, what we are doing here during the addition, but we want that one value to be read from the input output console, and what we want one value be initialized and be stored in memory. This is one of the option for doing the addition of two numbers. And another option may be that twice you make use of read statement in order to read the operand from input output console, and then you talk about the addition of these two numbers. But I am talking about the very first version of this addition of two numbers. I am going to take the one data from input output console and another data I am going to initialize by giving some of the initialization statement, and ultimately the second data will be initialized in some of the location in your memory. So I'm going for that version. So first of all, read statement you have given, and then what you are doing, you are basically talking in terms of addition. Say here I'm giving some label and then add statement,
Just hold on. Simply I'm going to write down add, and then I'm talking in terms of another operand. So you can write down, or you can write down X variable or operand 2. Sorry. Whereas we are going to talk about the initialization of this value. This way we need to give the initialization statement. How to give? I want the data to be stored in the capacity of one word. Which data? Say value 145. So this way we need to give this. What we mean by this statement? See, still this is not in green color. So that means in backend no functionality yet has been specified with that statement. What we actually are doing, we are going to read one input data from keyboard, for which we already have written the statement read. Regarding the second data, add operand 2 or add operand 2. Operand 2 is a variable. Here we have defined the variable, and that variable by default we are talking about integral values. And what is the way to define the variable? To initialize the value, basically not the variable, rather it's a value to be initialized to this variable. Yes, so that what we want, that it should be the value 145 be initialized to operand 2, and that ultimately will be stored in some of the location in memory. And dot data is a built-in reserve word. So how much it is going to specify, that how much capacity, how much memory it will occupy, this 145 will occupy whenever this value will be stored in the memory. So here if we give the value 1, so that means internally in the memory, this 145 will occupy the capacity of one word, or else we give whenever we give the value as 2, that means the same value will be stored in the capacity of 2 words. Whenever we'll give the 3, the same value will be stored in the capacity of 3 words. So wherever the more bits are there, capacity is enlarged higher than that the capacity of the given operand. In that case, the remaining memory will remain unused. All remaining values will filled with zeros. So in order to avoid any unnecessary occupancy of the data, in order to avoid any wastage of the memory, here I'm going to specify the word capacity as 1. Our word size already has been given as 16 bits. So this 145 value will be stored in the capacity of 16 bits only. So this is the way to initialize one of the operand, and in the variable operand 2, and that ultimately will be stored in some of the address in the memory. Fine. Now we need to write down. We need to associate some kind of the functionality with this add statement by writing down its corresponding micro instructions, and by specifying its instruction format. Now what I need to do? I need to come to modify machine instruction. Here I will create a new instruction. What I will create? I will create add. Add I have specified here. Fine. Now come to the instruction format. Again, corresponding to the add, we need to go for the 2 steps. As a first step, we need to specify its instruction format, and afterwards we need to write down the sequence of micro instructions to make it work. In the format option, what instruction format we need to give? First of all, we need to click on OP code and we need to drag it here in this window. Afterwards, we need to click on address part and we need to drag it into the instruction format. Now you can observe that here we have included 2 components as a part of the instruction format. 4 bits have been assigned to OP code,
and 12 bits have been assigned to the address. This is the same address as this will be used in order to store the operand in the memory, in order to bring the operand from the some specific location from this address. And which operand? Operand 2 that we have initialized as 145 value. Where will it be stored? What address actually will be assigned to the location of this operand in the memory? Exactly same address stored in the capacity of these 12 bits. Means whatever will be the part of this binary coded information add, entirely it will be the binary coded information of add, or add instruction ultimately in memory will be stored in the capacity of 16 bits. 4 bits will be termed as your operation code. Remaining 12 bits will work as the address part of the operand, this operand 2 that will refer to 145, which ultimately will be stored in the memory. Matlab from this location only this operand will be brought from the memory and will be added to the second operand, that the second operand which will be read with the help of the read statement. This thing we actually are going to implement. This thing we are going to ultimately talk about. Okay, so what instruction format here we have given? We have assigned 4 bits to OP code and 12 bits to the address part, and then we come to the implementation part. Now, what we are going to talk about? We are going to talk about addition of two numbers. Which two numbers? One number 145, which is being stored at this specific location in the memory. Which specific location? Which location is being specified in the address part? Address part, 12-bit address part of this instruction itself. तो यहाँ से 12 bit से address वाली location को extract किया जाएगा, and from this address ultimately this operand will be picked up, will be brought from the memory, and ultimately will be added to another operand which will be read with the help of the read statement. This is the thing we need to obtain. This is the thing we need to tell to the system, that this kind of the logic we need to obtain. So that is why we need to write down a sequence of micro instructions in order to obtain the same kind of the logic that we are going to talk about. So we'll go step by step what actually we are doing now. We are here, what we are doing, one of the operand is being lying in accumulator register, that we know. क्योंकि हमारा वो रीड स्टेटमेंट चला था, रीड से हमारा एक इनपुट आया था जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में गया था. तो एज ए वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट हम क्या चाहते हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द एडिशन ऑफ टू नंबर, ऑलवेज आपका एक्यूमुलेटर, एक ऑपरेंड आपका एक्यूमुलेटर में जाता है, एक ऑपरेंड आपका डीआर रजिस्टर में जाता है. डीआर से उठाया जाता है, डेटा रजिस्टर, दैट वी कॉल एज द डेटा रजिस्टर. फाइन. सो क्योंकि एक्यूमुलेटर रजिस्टर को फर्दर हमारा यूज किया जाएगा, सो व्हाट वी वांट कि जो पहले एक्यूमुलेटर रजिस्टर में गया था, या तो उसे आप डीआर में शिफ्ट कर लो, और फर्दर अगर आपका कहीं एक्यूमुलेटर यूज होगा, आपका इनिशियली एसी में आपका एक ऑपरेंड पड़ा हुआ है, और अगर विल गो स्टेप बाय स्टेप. पहले हम क्या करते हैं, मेमोरी से इस लोकेशन से इस ऑपरेंड की वैल्यू को उठा लेते हैं. हमारी कौन सी वैल्यू 145 है, which is we know that ultimately after assembling and loading, जब हम assemble and load चलाएंगे तो automatically this value will be loaded into the main memory. We can view at that time, at the moment we can view कि 145 आपका memory में आ गया, but during the execution time we want this value to be picked up from the memory, और वो किस में चली जाए, DR register में चली जाए, accumulator में चली जाए. Because हमारा one of the operand already is being lined in accumulator register, so we can go for the DR register. बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर डूइंग बेसिकली कि हम इसके 12 बिट से एड्रेस को उठाकर एआर रजिस्टर में डालेंगे. किसके एड्रेस से उठा के, आईआर हमारे आईआर प्रेजेंटली इंस्ट्रक्शन किस में पड़ी हुई है, आईआर रजिस्टर में पड़ी हुई है. सो व्हाट वी वांट कि आईआर रजिस्टर के, क्योंकि 4 बिट्स आपके ऐड को असाइन हुए, यू कैन गो टू दिस, यू कैन व्यू कि हमने फॉर्मेट में 4 बिट्स में अगर हम रीड करना शुरू करें, 0th बिट, 1th बिट, 2nd बिट, 3rd बिट, 4th बिट से लेकर 15 तक के बिट्स को अगर उठाकर हम उसे आईआर से उठा के, जो आईआर रजिस्टर इसे पूरा का पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम उसे एआर रजिस्टर में डाल दें तो वो हमारा एड्रेस पार्ट एआर में चला जाएगा. वो एड्रेस किसे सिग्निफाई करेगा, उस ऑपरेंड 2 के एड्रेस को करेगा जो अल्टीमेटली मेमोरी में स्टोर है. सो व्हाट वी हैव टू डू अल्टीमेटली कि हमने क्या फंक्शनैलिटी लिखनी है कि हमने आईआर रजिस्टर के 12 बिट्स को उठाकर एआर में डालना है. So that means we are talking in terms of registered R2R type instruction. So we have to create such kind of the instruction.
a new instruction by going to register R2R. यहाँ पर जाके you will click on new. यहाँ पर जाके what we want to do actually, what we want to achieve कि हमने IR रजिस्टर लिया, because IR में आपका बाइंड कोडेड इन्फॉर्मेशन असेंबल एंड लोड के बाद फैचिंग के बाद IR में आएगी आपकी फैचिंग किसकी करेंगे, जब ऐड की फैचिंग करेंगे then binding coded information of add will be placed in IR, but during this time हमें addition करना है. Addition के लिए one of the operand needs to be brought from memory. किस एड्रेस से उठाना है, इसके 12 बिट में. कहां से कहां तक, 4 बिट से स्टार्ट करके 15 बिट तक, क्योंकि आपका टोटल 16 बिट था. 0 to 3 बिट्स असाइंड हुए आपके ओपी कोड को, एंड फ्रॉम 4th बिट टू 15 बिट जो आपके 12 बिट्स हैं, दोज आर असाइंड, दोज आर वर्किंग एज एड्रेस बिट. यहां से इस एड्रेस को उठा के वेयर वी नीड टू प्लेस इन ARF रजिस्टर. इस 12 बिट्स में जो वैल्यू पड़ी हुई है दैट विल रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑफ द डेटा, एड्रेस ऑफ ऑपरेंड 2 लाइंग इन द मेमोरी. सो अब हमने क्या करना है, इसी फंक्शनैलिटी को राइट हैंड साइड में अकॉर्डिंगली वी हैव टू डू द सेटिंग्स. क्या सेटिंग्स करनी है कि हमारा सोर्स मतलब किस रजिस्टर से उठाना है, IR से उठाना है. स्टार्ट बिट कहां से करना है, 4th से स्टार्ट बिट करना है. लेफ्ट को देखो 4th बिट से उठाना है ना, तो 4 से लेकर 15 तक के बिट्स को उठा के बिट्स वाले एड्रेस को उठाना है. 4 से लेकर उठाना. डेस्टिनेशन क्या है आपका, AR रजिस्टर है. डेस्टिनेशन डेटा कहां जाना चाहिए, इन AR इट शुड गो. तो हमने AR को क्लिक किया और डेस्टिनेशन रजिस्टर का स्टार्ट बिट कौन सा है, 0th बिट है. और कितने नंबर ऑफ बिट्स की बात कर रहे हैं हम, 12 बिट्स की कर रहे हैं. मतलब 4th से स्टार्ट किया, 4th ऑनवर्ड्स टिल 15th बिट आपके कितने बटे, नंबर ऑफ बिट्स कितने बने, 12 बिट्स. Now this way we have done the settings कि IR register के from 4 to 15 bits are working as address part, and we want this address part to go to the AR register. For that what we have done, source में आपने IR register को select किया, start bit आपने 4th bit किया, because 4th onwards we want कि वो सारे वाले बिट उठ के, सारे वाले बिट के अगेंस्ट वाली वैल्यू उठ के किस में आ जाए, आपका AR रजिस्टर में आ जाए. AR भी डेस्टिनेशन रजिस्टर है, कहां से शुरू हो, 0th से स्टार्ट हो और नंबर ऑफ बिट्स कितने हो, 12 बिट्स हो. सो वी हैव डन विद. नाउ क्लिक ऑन ओके. सो व्हाट वी वांट, इसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपको. आप ट्रांसफर R2R में जाएंगे एंड देन यू विल क्लिक ऑन इट एंड यू विल ड्रैग एंड ड्रॉप इट हियर. फाइन. सो वी हैव डन विद. हमने क्या किया, IR से 4 से 15 वाले बिट, 12 बिट्स वाली वैल्यू को उठाकर where we have transferred it to AR register. अब AR, yes, हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को एड्रेस अलॉट कर रहे हैं एक तरह से, मतलब उसको नो इंस्ट्रक्शन को एड्रेस अलॉट नहीं कर रहे. आई टोल्ड यू, ऐड के अंदर जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट था उसके अंदर ऐड को 16 बिट्स असाइंड है. ऐड को इसके 4 बिट्स इटसेल्फ ऑपरेशन का काम कर रहे हैं ऐड का, लेकिन रिमेनिंग 12 बिट जो है एड्रेस ऑफ डेटा, ये वही वाला एड्रेस है जहां पर जाकर ये ऑपरेंड 2 145 जो हमने वैल्यू दी है, असाइन किया है, मेमोरी में जाकर स्टोर होगा. उसका जो एड्रेस मेमोरी में आप जब डिबग टाइम में करोगे तो देन यू विल सी कि एग्जैक्टली सेम एड्रेस ही मिलेगा आपको. अगर ये एड्रेस देखो 0 1 2 3 4 5 नीचे एड्रेस जा रहे हैं ना, बढ़ते चले जा रहे हैं. सपोज ये 5th लोकेशन पर जाके स्टोर है, तो ये 5 पे ही आपको इस 5th लोकेशन 5 ही इसकी वैल्यू बनेगी, और इसी 5 पर जाके 145 वैल्यू यू विल बी एबल टू व्यू कि सेम एड्रेस ही आ रहा है. इस एड्रेस को 5 से उठाकर, और जहां ऊपर ऐड इंस्ट्रक्शन कहीं आपकी 16 बिट में सेव होगी ऐड इंस्ट्रक्शन, उसके 12 बिट को अगर आप ज्वाइन करोगे तो 5 को ही रिप्रेजेंट करेगा. आर यू गेटिंग इट? हम डेटा को फेच करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हमारे जो दूसरा ऑपरेंड है. यस, हम डेटा को फेच कर रहे हैं यहाँ पर. और कहाँ से फेच कर रहे हैं, इस एड्रेस से उठा के फेच कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमें काम क्या कराना है, हमें एडिशन का काम कराना है. एडिशन के लिए एक डेटा आपका मेमोरी में पड़ा है, कौन सा डेटा, 145 पड़ा है, और दूसरा डेटा रीड स्टेटमेंट से आएगा जो AC रजिस्टर में गया. ओके. अब हम लोकेट कर रहे हैं कि अल्टीमेटली इस एड्रेस वाले पर ही आपको डेटा. आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास द कांसेप्ट ऑफ डायरेक्ट एड्रेस इंस्ट्रक्शन एंड इनडायरेक्ट एड्रेस इंस्ट्रक्शन. व्हाट एक्चुअली वाज दैट? डायरेक्ट एड्रेस का यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट आता है कि डायरेक्टली द डेटा इज बीइंग स्टोर्ड एट द सेम एड्रेस एज स्पेसिफाइड इन द एड्रेस पार्ट. मतलब इसी एड्रेस पार्ट पे आपको डेटा पड़ा हुआ मिलेगा इन द मेमोरी. ओके. सो यही वाले 12 बिट्स पे. सो नाउ आई एम कमिंग टू द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट अगेन. आपने क्या कर लिया, आपने IR के 4 to 15 बिट्स उठा के AR में डाल दिया.
नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अब आपको मेमोरी से ARF लोकेशन से डेटा को उठाना है और DR में डालना है, क्योंकि आपका सेकेंड ऑपरेंड DR में आ जाना चाहिए। और इस ARF लोकेशन से उठा के DR में कौन सा डेटा डालोगे? 145। सो M of ARF लोकेशन से उठाना है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। मेमोरी एक्सेस में क्लिक करेंगे, बिकॉज हियर वी आर रेफरिंग टू द मेमोरी। सो डबल क्लिक ऑन इट। यहाँ पर यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू इंस्ट्रक्शन। व्हाट यू हैव टू डू, बेसिकली आपको मेमोरी से उठाना है डेटा, ARF लोकेशन से उठाना है, and where you have to transfer it to, you have to transfer it to DR register. This thing you want to achieve, and then that means आप क्या कर रहे हैं? रीड मोड कर रहे हैं, मेमोरी से रीड कर रहे हैं, मेमोरी से रीड कर रहे हैं। अल्टीमेटली आप डाल कहाँ पे रहे हैं? आप डाल रहे हैं आप इसे DR रजिस्टर में। and the address, which register is going to work as address register? AR register. Now you click on OK, and you can again drag and drop it. So what where we were, memory access में आओ, and then from आप क्या करें? From you are going to transfer the data from memory to DR from ARF location, from the memory in from ARF location. You are going to pick up the data, and ultimately you are going to transfer it to DR. Now we are done with, we have obtained one data to be picked up. One data we have obtained from memory, and we have transferred it to the DR register, and another data already is lying in the AAC register. Now we need to do the addition. अब यहाँ पर you need to do the addition. So with yes please. मैम इन प्लेस ऑफ दिस कैन वी डू कि ऐड का जो ओपी कोड है उसको सीधा डीआर में भेज दें? लेकिन उससे बेटा वो तो ओपी कोड है, वो डेटा थोड़ा ना, या वो एड्रेस थोड़ा ना। ओपी कोड को ऐड करके हमें क्या मिलेगा? हमें तो ऑपरेंड को डेटा को एडिशन कराना है। एडिशन का जो एक्चुअल में ओपी कोड होता क्या है? ओपी कोड है मतलब ऑपरेशन। ऐड इज ऑपरेशन। अब देखो ये जो ऐड, वेयर इज द योर सोर्स कोड? लेट मी गो टू द सोर्स कोड। आपकी फर्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन आपकी कहाँ गई? एक मिनट रुको, आई विल स्विच बैक। आप ये आपके ऐड ऑपरेंड टू, कैन यू व्यू दिस इंस्ट्रक्शन? This entirely including add and operand 2 is a complete one instruction. It is one, it will be termed as complete one instruction. It is consisting of two components. One is your add, another is your operand 2. Add is called as your OP code, and operand 2 is called as the address of the data stored in the memory. Should I repeat? No ma'am, if we view this instruction add operand 2, this completely it is one instruction. Add itself is not the instruction. रीड में आपको ऑपरेंड 2 एड्रेस पार्ट नहीं मिला था, इसलिए आपने अनयूज यूज किया था उसके इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में। आपने एड्रेस को नहीं यूज किया था। 12 बिट्स इसके यहाँ, क्योंकि इसके अलोंग विद द रीड स्टेटमेंट यू कैन नॉट व्यू एनी अदर पार्ट, क्योंकि सिंगल ओपी कोड इटसेल्फ था, इसलिए इसमें अनयूज बिट्स को 12 बिट्स यूज किया था। उसके इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में हमने एड्रेस पार्ट के 12 बिट्स को यूज नहीं किया। सिमिलरली राइट में भी ये सिंगल है, स्वैप में भी ये सिंगल है, बट इन ऐड यू कैन व्यू द टू कंपोनेंट्स, one is your add and another is your operand 2. This completely is working as a single instruction, जिसके अंदर आपके 2 parts हैं। Yes please. मैम आपने ये बोला था कि एक हम रीड कराएंगे और एक हमें मेमोरी से मिलेगा डाटा है, यही कर रहे हैं। पहले वाला भी डाटा मेमोरी से ही चाहिए कि वो भी एसी से सीधा accordingly you can customize later on. This is one of the example of doing addition of two numbers. This way we are doing this. अगर रीड नहीं कराना हमें उसे सिंपली मेमोरी से you can do of your own ना, those kind of the versions. वो तो आप पे डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप फर्दर आप दोनों, रादर आई एम गिविंग यू होमवर्क कि आपको एक प्रोग्राम करना है कि दोनों ही मेमोरी से उठाने हैं, और एक प्रोग्राम करना है आपको दोनों ही रीड स्टेटमेंट से रीड करने हैं, और थर्ड वर्जन इज कि आपको एक इनपुट आउटपुट कंसोल से रीड करना है, कीबोर्ड से रीड करना है, और सेकंड आपको मेमोरी से उठाना है। So these 3 versions of the add program you have to do till our next class. Okay? So uske accordingly you will observe ki different kind of things are required to be made. Yes, please. Okay. Pucho beta. Yes, ma'am. Ma'am, when we assign the value of operand 2 as a 145,
So firstly, where will it be stored? It 145. will be stored in memory after whenever we click on assemble and load. Let me complete the program. Let me show you So the execution. Then I will show you how actually it is being stored in memory. Then I will show you कि कैसे एड्रेस से okay, मैचिंग हो रही है, कैसे ऑपरेंड को उसी लोकेशन से उठाया जा रहा है, कैसे एडिशन हो रही है. एटलीस्ट लेट मी कंप्लीट द प्रोग्राम, देन ओनली ना आई विल शो यू. उसका एग्जीक्यूशन पार्ट तो आई विल शो यू. ठीक है, should I proceed now? okay, ma'am. So Okay. what I was telling you, Yes, ma'am. कि add operand 2 is working as one operation, one instruction, or add is the operation or OP code. Add itself is OP code. OP code का literal meaning देखो ना, ऑपरेशन कोड. कोई भी ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, जो कोई काम करेगा, ऑपरेट करेगा, दैट इज ऑपरेशन कोड. जो भी बिल्ट इन कोड आपका ऑपरेशन का काम करेगा, एडिशन का काम करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा, that will be termed as a OP code. Fine. And the remaining 12 bits are basically working as your address part. Okay, indicating to the address part. Now what we are doing कि हम इसके 12 बिट्स के एड्रेस से जो मेमोरी में 145 कहीं जाके स्टोर होगा, 145 को उठा के डीआर रजिस्टर में ला रहे हैं. दिस वर्क वी आर डूइंग. सो आई नीड टू गो टू मॉडिफाई मशीन इंस्ट्रक्शन, क्लिक ऑन ऐड. हमने इसका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट दिया. देन आई एम कमिंग टू इम्प्लीमेंटेशन पार्ट. इम्प्लीमेंटेशन मतलब आईआर के 4 to 15 बिट्स को उठाया. आईआर इस टाइम क्या सिग्निफाई कर रहा है? आईआर सिग्निफाई कर रहा है पूरी ऐड ऑपरेंड 2 इंस्ट्रक्शन को. वी आर एज्यूमिंग जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन बाइनरी कोडेड फॉर्म में पहले मेमोरी में गई थी, वहां से फेचिंग टाइम में वहां से उठा के आईआर में गई थी. फेचिंग का ये काम होता है कि मेमोरी से उठाओ बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन और उसे उठा के आईआर में डाल दो. तो आईआर के 12 बिट्स को उठाकर हम एआर में डाल रहे हैं. क्यों डाल रहे हैं? कि लेटर ऑन मेमोरी के अंदर से एआरएच लोकेशन से जो 12 बिट से सिग्निफाइड है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जहां हमें 145 मिलेगा वो उठा के लाएंगे और उसे डीआर में डालेंगे. दिस इज आवर सिग्निफिकेंस ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स. Clear? So you have to go step by step. That's why I told you to execute initially read statement only. Then we added stop statement. Then slowly and slowly we added write statement. But once you are not doing the implementation part at your home or at your own part, then you will not be comfortable to understand the subsequent execution of the programs. That's very much clear. So every day you need to implement. You need to clear all the concepts at your home. You have to revise all the concepts. You need to practice all the implementation part. Then only you will learn. Okay, so now we have transferred the data to be picked up from memory from ARF location to the DR register. Now we need to do the addition. अब एडिशन के लिए आप अर्थमेटिक ऑपरेशन में जाओ, राइट साइड में उसे डबल क्लिक करो एंड यहाँ न्यू करो. And then you need to write down some of the mnemonic names. Say I'm giving you giving add. किस-किसको add करना है? Add, how will it work? It basically what it will do? It will add AC and DR, and the contents will be transferred to AC. This way it works. Fine. मतलब AC और DR को आप इसमें से add हटा दें. ये आपका बहुत it's a bigger name now, so I'm removing this add. It's a user defined name. It hardly matters. It should be meaningful only. So what you are doing, giving AC, the contents of AC are being added to DR, and ultimately the result is being transferred to AC. This functionality you want to achieve. So what you are doing, first you need to specify the OP code. आपका OP code इसमें से कौन सा काम करेगा? Add का करेगा, subtract का करेगा, multiply करेगा, divide करेगा. So we need to click on add. See, once you are comfortable in executing this program, then similarly you have to do subtract, similarly you have to do multiply, similarly you have to do divide, and this way you will be able to accomplish first 3 programs of your program list. You can go through the program list. Now we have to specify the source. कि first source से data कहाँ से आएगा? AC register से. Second से कहाँ आएगा? DR. We need to select DR. एंड डेस्टिनेशन कहाँ जाएगा? आपका आउटपुट कहाँ जाएगा? डीसी में जाएगा. ओवरफ्लो बिट की हम बात नहीं कर रहे, कैरी बिट की हम बात नहीं कर रहे. सिंपली वी आर सिंपली गोइंग टू टॉक अबाउट द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ द एडिशन राइट नाउ, एंड वी क्लिक ऑन ओके. यस प्लीज.
Ma'am, we fixed DR to 16 bits and AR to 12 bits. Won't that create a problem that we are transferring data from a smaller width We are not memory? transferring data. We are not transferring data from AR to DR. See, we are transferring, first of all, look at the very first statement. We are transferring, we are extracting the data, extracting the address from 4th bit to 15 bit. Means only we are talking in terms of 12 bit. From this 12 bit of IR register, we have picked up the address and we have transferred it to AR register, which is of the capacity 12 bits. Further, what we are doing from memory, मेमोरी में वर्ड का साइज क्या आपका 16 बिट है, लेकिन वो वर्ड का साइज, ये जो डेटा का साइज है, इसके एड्रेस का साइज 12 बिट है. सो फ्रॉम ARF लोकेशन से अल्टीमेटली वी आर पिकिंग अप द वैल्यू ऑफ द डेटा. जो 145 डेटा है वो कहां जाके स्टोर होगा, 1 वर्ड की कैपेसिटी में, और 1 वर्ड का साइज क्या था, 16 बिट था, जो आपका डेटा रजिस्टर का साइज है. तो आपने 1 वर्ड की कैपेसिटी से ARF लोकेशन से डेटा को उठाया, उसे DR रजिस्टर में दिया, और दोनों का साइज सेम है, लेफ्ट एंड राइट साइड वाले का. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Okay. तो आपका मेमोरी से डेटा, यस प्लीज मैम ओवरफ्लो बिट एंड कैरी बिट में का क्या यूज है? see that we can discuss later on, but at this moment we are talking in terms of the simplest kind of the addition, when we are not talking in terms of overflow bit and we are not talking in terms of carry bit. Clear? So now the data has been transferred from memory to the data register. Now we need to do the addition का we already have implemented. यहाँ से what you will do, you will click on it and you will drag it and drop it here. So what is going to be done कि AC और DR के contents add हुए, add होके ultimately the data is being transferred to AC. Fine, we have done with. और ultimately write statement क्या करती है, write statement AC के contents को उठाती है, उसे display कराती है on input output console, और हमारे अगर final added data is being stored in AC, so we have done with our work. Now we need to terminate this code by AND statement. We need to click it and we need to drag it. Now let's run this program and we see whether successfully it is being able to run or not. We click on OK. Maybe we can get some kind of the errors. Then we need to rectify those kind of the errors. Fine. Now you can view that add. As and when you click on some statement and you click on enter, then add also has been converted to the green color. Why? Because green color, because in backend we have specified its functionality. Now we need to run this program. First of all, you need to reset everything in order to clear all the garbage values or some intermediate values, and you need to assemble and load. Now you can view on right hand side as and when you assemble and load. Save file, yes please. And then now you can view on right hand side that all the statements, machine language instructions have been converted in terms of the binary values, and you can view that in binary values these have been stored in main memory. You can bring the cursor to the very first statement, it's going to signify your statement read. You can bring to second statement, second instruction is add operand 2. So this basically is going to represent your second instruction, binary coded instruction stored in 16-bit capacity. 16-bit में आपका binary में convert हो गई है word की capacity में, it is being stored in the memory. We bring the cursor to the third one. You can view कि हमारा control right वाली statement पे है, इसका binary coded में conversion हो चुका है, binary coded में इसका translation होके it is being stored in memory. Then we bring to the stop statement. Again we can view that stop के बाद देखो अब हमारा 145 कहाँ जाके store है. We can see fourth location पे आपका 145 ये data मिलेगा. This is 145. This is, हम देखते हैं इसे decimal में convert करो, then we can view क्या 145 है ये आपका. Convert it to decimal. Stop See, statement. yes, this is 145. Ma'am. Yes, please. Ma'am, stop statement. हाँ बोलो बेटा. प्रोग्राम की एकदम लास्ट में लिखा होना चाहिए ना. आपका इनिशियलाइजेशन जो स्टेटमेंट है, एक्चुअली जब whenever the program start executing, at this moment this statement, the initialization statement in between will be executed. It's not like that, because control, as and when the control will come to the add statement, at that moment it will come to the address part. At that moment the data will be picked up from the memory located at this, and ultimately it will brought. You have basically
learned the C++ programming language or any another programming language. So in that case also, it's not ki every time sequentially you are going to write down all the statements. You are using a number of subroutines, you are using number of modules. So as and when it brings the control comes to a in between statement in the main program, so this you can call as the main program. And stop is the end of your main program. But all the specification or the declaration statements will come after at the end of the program. This is syntactically as the part of grammatical part of your assembly language programming. Is that okay? Yes, But ma'am. sequentially the program will go on executing. As and when the stop will meet, then only the termination will happen. Okay, so when as and when you have given this initialization statement, it has been stored in some of the location in memory. और किस लोकेशन पे स्टोर हुआ, ये देखो लोकेशन कौन सी है, जो इसके 12 बिट्स में पड़ा था ऐड के अंदर. अब देखो 12 बिट्स में ऐड में क्या पड़ा था, यहाँ देख लो ये एग्जैक्टली सेम है कि नहीं है. पहले देखो कहाँ स्टोर है आपका, ये 145 आपका इस 4th लोकेशन पर स्टोर है. और ऐड वाली स्टेटमेंट आपकी कहाँ स्टोर है, ऐड वाली किसको ये सिग्निफाई कर रहा है. तो देखो इसके 12 बिट्स क्या इसके लास्ट वाले लीस्ट सिग्निफिकेंट 12 बिट्स इक्वल हैं कि नहीं है. इन दोनों के इक्वल होने चाहिए इन ऑर्डर टू सिग्निफाई कि 4 जो उठ के आ रहा है, जो एड्रेस बिट्स है, एड्रेस की वैल्यू है एग्जैक्टली सेम एज द 12 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ योर ऐड स्टेटमेंट. मैम ये 145 जो है वो 4th एड्रेस पे क्यों स्टोर है? This is basically this way the system has been the architecture of the CPU has been designed internally. आपका basic computer architecture that we are going to study in 5th chapter, the built-in details that the hardware engineers have designed the CPU in such a manner. They have designed all the instructions in such a manner, the machine instructions in such a manner that automatically the address part has been given as a part of your one of the component of your instruction. तो मैम ये कहीं पर भी जाकर स्टोर हो सकता है एड्रेस में? क्या कह रहे हो मैम? तो इसकी जो एड्रेस में ये वैल्यू कहीं पर भी जाकर स्टोर हो सकती है? इसके एड्रेस में इसका जो 12 बिट्स का एड्रेस है उस लोकेशन पर वैल्यू स्टोर होगी जो डेटा आपने दिया. Because आपने you already have studied the concept of direct address instruction, indirect address instruction, and instruction format. This is the significance of studying the instruction format. कि whenever see what we are doing actually with the help of the CPU simulator, we simply are going to visualize all the details that we are theoretically studying in 5th chapter. 5th chapter theoretically we are studying step by step, and here we are going to visualize as if actually the CPU is going to work. We are going to study the internal built-in details as built-in means as built-in of the as a part of your basic computer. Okay, those basic computer already or the enhanced versions of the computers have already been designed in such a manner, and we are simply going to study their behavior, how actually the execution at the instruction level is to be performed, how the instruction format works, how instruction instruction is that okay? Yes ma'am. Now let me complete please. Okay, so I would like to show you कि आपका जो add operand 2 वाला पार्ट है, इंस्ट्रक्शन है, ये आपकी यहाँ जाके स्टोर है. इसके आप लास्ट के 12 बिट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट देखो 0000000010, ये 4th है ना, 4 को सिग्निफाई कर रहा है ना. अगर आप इस 4 को आप जाकर इस 4th लोकेशन पर आपका 145 स्टोर है, अगर आप इसे बाइनरी में कन्वर्ट करो, देखो ये एड्रेस, ये देखो ये 4 है ना, आपको बाइनरी में पता है कि 4 जो होता है 0104 को सिग्निफाई कर रहा है, एग्जैक्टली सेम है जो ये 4 है. दैट मीन्स इस 12 बिट्स वाली लोकेशन को, इस 12 बिट को उठाकर AR 12 बिट वाली लोकेशन से इन बिट्स को, दीज बिट्स आर वर्किंग एज द एड्रेस बिट. अब 12 बिट्स को उठा के इस लोकेशन से उठा के इस डेटा को उठा के DR रजिस्टर में डाला गया एज अ पार्ट ऑफ द माइक्रो इंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ योर इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट योर ऐड इंस्ट्रक्शन. आप बाइनरी टू बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज गोइंग लार्ज, एंड दैट इज व्हाई देखो यू कैन व्यू दैट ये 4 को सिग्निफाई कर रहा है 0100 एग्जैक्टली इसके 12 बिट जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ऐड इंस्ट्रक्शन के, इट इज गोइंग टू सिग्निफाई एज योर 12 बिट्स. नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम एंड यू कैन यस प्लीज. मैम 0 नंबर है मैम एड्रेस का, वो रिजर्व करके रखा गया है. क्या बेटा? मैम एड्रेस में मैम 0 है मैम, उसके आगे कुछ भी नहीं है मैम, उसको रिजर्व करके रखा जाएगा. वेरी फर्स्ट एड्रेस? यस मैम.
आपकी काउंटिंग हमेशा 0 0 से स्टार्ट होती है. वेरी फर्स्ट एड्रेस ऑलवेज इज 0 0 0, and then the next value is 1, next value is 2, next value is 3. All these are written in binary form, and the binary, basically the conversion from binary to decimal and vice versa, you will learn in third chapter in numbering system. Okay, so all these are the binary values, all these see, and in decimal. So this way, in a sequential manner, all the values are being stored in the memory. Memory is divided into a number of words, and very first address is being assigned as 0 0 0, all zeros. This way. Is that clear? Now I am going to run this program. You need to bring the cursor to the very first value, and then you need to reset everything, and assemble and load already you are done, and now you need to run it. What actually we are doing, we are reading one data from keyboard. Say I have written 100 value, another value need to be brought from memory, which has been initialized with the help of the initialization statement. Which value will be brought? 145. Ultimately, what required result should be there? It should be 245. Isn't it coming? No, it is giving you wrong result. That means some of the error is there, some of the semantic error is we are meeting. We need Ma'am, to locate. you have not changed the field where unused should be required. It is still ignored. Where, in which in section beta? Add. ऐड का जब हमने वो किया था We'll see. देखते हैं किया है कि नहीं किया. Okay, we need to rectify the error, and this way only we'll be able to learn. I am going to add. नहीं बेटा देखो, एड्रेस किया हुआ आपका, अनयूज नहीं किया. 12 bit address है. Is that okay? Okay. Is that okay? Now we need to identify the error, and here we come up with the debug option. Debug से हमें पता चलेगा कि हमने कहाँ लैग किया, कहाँ हमारी प्रॉब्लम थी. We need to rectify that error, and now we need to apply debug mode. कि कहाँ मिस्टेक आ रही है आपकी. Bring the cursor to the very first statement and then reset everything. इसे for the time being we can convert it to decimal. Again we can convert it to decimal. इसे आप ऐसे बाइनरी में ही रखिए, so that we will be able to observe. And then we need to use debug mode. Debug mode चलाओ. Debug mode में पहले fetch statement आपकी चलेगी to the very first statement. आपका प्रोग्राम काउंटर में वैल्यू 0 है. 0 will be transferred to AR. So I am clicking on step by micro. M of AR से आपका क्या आया? इंस्ट्रक्शन फैच होके IR में आई. फर्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन आपकी रीड इंस्ट्रक्शन है, जो फैच होके किस में आएगी? IR में आएगी. IR में ऑलरेडी जीरोज, इसमें ऑलरेडी जीरोज है मेमोरी में फर्स्ट टाइम, तो ऑलरेडी जीरोज ही रहेंगे. तो स्टेप बाय माइक्रो में यू नीड टू क्लिक, एंड देन you need to click on, आपका क्या होना चाहिए? PC+1 होना चाहिए. Is this working? देखो PC+1 हो गया. That means now the control has come to our add statement. अब add में देखो कहाँ हमारी मिस्टेक रही, और 1th लोकेशन पर ही हमारी add statement stored है. You can view in the memory. क्या वो add statement दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा? At the 1th location we can view. मैम आपने असेंबल एंड लोड नहीं किया था मैम डिबग करने से पहले. Are you sure? यस मैम आपने नहीं किया. यस, हाँ यस. आपका ये कन्वर्टेड, देखो आपका ट्रांसलेटेड फॉर्म नहीं है, आपका जीरोज एंड वंस की वैल्यू नहीं दिखा रहा. सो आई नीड टू कम आउट ऑफ इट. डिबग मोड को डिसेबल करो, एंड अगेन यू नीड टू रीसेट एवरीथिंग. यू नीड टू असेंबल एंड लोड. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ असेंबल एंड लोड? दैट इट विल कन्वर्ट द एंटायर प्रोग्राम in terms of zeros and ones, and it will load it into the memory sequentially. Very first आपका data all zeros, read का जीरा all zeros है. Then we come to the add statement. Add statement की आपकी value you can view. Then आपकी next statement है write, and thereafter you do have stop statement. अब हम चलाते हैं, we bring the cursor to the very first statement, and by that time we can check our settings कि हमारी options के अंदर indexing क्या आपकी left indexing है कि नहीं है. We need to make it as left indexing. Apply and then okay. Left indexing का क्या मीनिंग है आपका? कि आपका जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट वो रीड करना स्टार्ट करे, इट शुड स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. Why? Because आप ऐड में दे सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट से रीड करते हैं तो ओपी कोड आपका 0th बिट, 1th बिट, 2nd बिट, 3rd बिट, एंड देन 4 to हमने 15 बिट एड्रेस को दिए हैं, क्योंकि अगर वो राइट से स्टार्ट करेगा तो उसकी इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाएगी.
इट कुड, अगर आपको राइट जस्टिफाइड वाली ऑप्शन यूज करनी थी तो आपको ओपी कोड को राइट साइड में आप ड्रैग करके लाते, तो दिस वे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट वुड हैव बीन दिस वे ओनली, अगर आप राइट जस्टिफिकेशन को यूज करेंगे. बट बिकॉज वी आर यूजिंग लेफ्ट जस्टिफिकेशन, तो यू विल हैव टू the order of the instruction format in this manner. Then click on OK. I think this was the problem, that the change we have done, this was the problem due to which we were getting the wrong result. Still we need to, I'm directly now clicking on run, whether it's working or not. Just stop it and then run it again. Clear console and then reset everything. I'm doing once again maybe, and then assemble and load and then run. Let me see. Exception halted due to there are currently no predefined inputs from the user of type long. Again we'll have to locate why it is giving you this kind of the error. I think we need to save the machine first. We have made changes. Clear console and then reset everything, and then what kind of the changes we have done. Just hold on for a moment. Hello. नीनू अभी मैं क्लास ले रही हूँ. I will talk to you later. Hello. Yes, please. Now we need to, I need to recheck all my settings कि हमने इंडेक्सिंग में क्या किया था. लेफ्ट सेट किया था, लेफ्ट जस्टिफाइड सेट किया था. Apply and then OK. And I need to bring the cursor to the very first statement, and then we need to reset and everything, then assemble and load and then run. We are getting some kind of the error. Halted Have you due- saved the text file? Have you yes, saved? yes. I was talking about the saving the text and I forgot. Let me save it maybe, but I don't think it has happened due to that only. Let me save it. Let me save the text file. Let me save the machine file. Save machine, and let me run it again. Assemble and load, and then I need to run it. Halted due to an exception. There are currently no predefined inputs from the user of type long. See, we need to try the debug option in this case, because we are not being able to rectify the error. We need to find out what kind of a problem actually has happened. First of all, we need to do assemble and load, and then only I need to click on debug option. According to the debug option, first of all, the control will come to the very first statement of the fetch statement, and according to it, the control will come to the PC to AR. The PC to AR statement will work, and I click on step by micro. Yes, it is working. Then from M of AR से data is going to IR, all are zeros. So IR में कोई change नहीं हुआ, all are zeros. And then PC should be incremented by 1. Yes, PC is being incremented by 1. That means next time it will point to the next statement, that is add statement at the next attempt. Now step by micro again, and now it has come to the very first statement of read statement. It says that the input should be taken from keyboard and the result should be transferred to AR, AC register. Now at this point, some kind of the problem is there. Now, yes, please. Restart the CPU sim. So you suggest to restart me? Yes, ma'am. Close this window and. Chalo, anyway, I'm closing it and then restarting. Then we'll see what actually has occurred. And let me close it, and then immediately I will restart it. It will take a moment to restart, hardly. And I need to go to. We need to go to the CPU sim. We are talking about 4.0.1. We need to go to the batch file, and we need to click on this is the executable file in order to start the interface of your CPU sim.
and the program that earlier we were talking about, we need to open that program, and that program was basically this is your first program as your course contents, and I already have opened your text file. Now I need to open the machine file. Open machine, and we need to go to, and then practicals, and then CPU file. Machine file you need to open. You bring the cursor to the very first statement. Now we'll start executing. Click on your assemble and load. Reset everything already, though it is reset. Then assemble and load, and then afterwards you need to click on run statement. See, now it's working, and the very first value that I'm going to input from the keyboard, say it is 100, and already another value is being stored in the memory is 145. Okay, so ultimately what should be the desired result? It should be 245. Now we need to observe whether yes, it is giving you the correct result, 245. Now I would like to show you its execution step by step using the debug mode in order to better understand its functionality. Okay, I'm resetting everything. I'm bringing the cursor to the very first value. I am clicking on assemble and load. Now you observe line by line how actually this program is working. See, I have enabled the debug mode. The control has come to the very first statement of fetch statement. PC to AR, the data will be transferred. Presently, our control is at the very first statement, read statement. The address of read will be transferred to AR, that is all zeros. And then from ARF to location to the binary coded value, that is again all zeros of read statement will be transferred to IR. That's why the value of IR has not been changed. Step by micro. Again, you can view control has come to the next statement. PC will be incremented by 1. And internally, the decode statement will execute. What is the meaning of decode IR? Decode of IR means binary coded value of IR that is presently going to represent the binary coded value of read will be interpreted in terms of its components. कि कितने बिट्स ओपी कोड को असाइन होंगे, कितने बिट्स आपके एड्रेस पार्ट को असाइन होंगे. जो डिसीजन मेकिंग पार्ट है दैट इज टू बी डन ड्यूरिंग द डिकोड फेज. Okay, and afterwards step by micro आपका it has come to the implementation part of read statement. Now the input statement will work. The data will be inputted from keyboard. हमने say we have inputted 100. That will go to accumulator register. You can view in the right hand side कि as and when you click on enter आपका accumulator में आपकी 100 value आ गई. Now you can view. Now you need to add this value into the value initialized in the memory. That another value is 145. Now again I need to click on step by micro. Again the fetch statement is working for the next statement. What is the next statement? That is your add operand 2. Entirely this is termed as one statement. Now fetching of binary coded value of add statement जो memory में saved है, in order to fetch it in the IR register, this fetch sequence is required to be executed. Fetch sequence क्या करेगी? ये देखो राइट साइड में जो ऐड स्टेटमेंट की बाइनरी कोडेड वैल्यू है, इस पूरी की पूरी 16 बिट को उठा के IR रजिस्टर में लाएगी. यू कैन व्यू द चेंजेस एज एंड व्हेन दिस फैच स्टेटमेंट इज बीइंग वर्किंग. पहले क्या हुआ? पीसी की वैल्यू को AR में ले आए और पीसी की वैल्यू क्या है? 1 है. इस टाइम इंक्रीमेंट हुई थी वैल्यू, बस डेसिमल में इफ यू विल व्यू तो 1 है. तो ये जैसे ही आपकी क्या होगी, पीसी से AR आपका वर्क करेगा, ऑटोमेटिकली AR की वैल्यू भी 1 हो गई. यू कैन व्यू कि AR की वैल्यू 1 हो गई. आफ्टरवर्ड्स बट यू कैन व्यू इस 1th लोकेशन से राइट साइड में मेमोरी के अंदर 1th लोकेशन पे जो बाइनरी कोडेड वैल्यू ऑफ ऐड स्टोर है, उसे बाइनरी कोडेड वैल्यू ऑफ उस इंस्ट्रक्शन की वैल्यू को उठा के इट एंटायर वैल्यू 16 बिट वैल्यू विल बी ब्रॉट फ्रॉम मेमोरी एंड विल बी प्लेस्ड इन IR रजिस्टर विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट m ऑफ AR से IR में. नाउ क्लिक ऑन स्टेप बाय माइक्रो. आप देखो IR में आ गई. क्या वैल्यू आई? You can convert it to right side में आप मेमोरी की वैल्यू को भी convert it to decimal. You can view ऐड की आपकी डेसिमल वैल्यू क्या है? 12292 IR, और यू कैन कंपेयर इट टू द बाइनरी कोडेड वैल्यू. अगर ये तो अभी हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, यू कैन कंपेयर दिस वैल्यू, तो बोथ आर सेम. तो यहाँ फैचिंग हैज टेकन प्लेस. फैचिंग का क्या मीनिंग था कि इस IR की जिस इंस्ट्रक्शन पे हमारा प्रेजेंटली कंट्रोल है, उसकी बाइनरी कोडेड वैल्यू को उठाकर उसे IR रजिस्टर में, CPU के IR रजिस्टर में प्लेस कर देने को
फैचिंग कहते हैं. दिस इज द फंक्शन. नाउ अब सीपीयू के पास आईआर रजिस्टर में एक इंस्ट्रक्शन आ गई. अब इस इंस्ट्रक्शन को फर्दर एग्जीक्यूट कराना है. एग्जीक्यूट के लिए फर्दर हमने स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, एंड प्रायर टू दैट आपकी फेच स्टेटमेंट कंप्लीट होगी. यू नीड टू स्टेप बाय माइक्रो. डिकोड हुआ आपका, डिकोड होने के बाद एंड हुआ. नाउ हैज कम टू द वी हैव कम टू द एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ ऐड स्टेटमेंट. अब ऐड स्टेटमेंट में हमने फंक्शनैलिटी क्या दी थी? आई एम कन्वर्टिंग इट टू बाइनरी. अगेन राइट हैंड साइड को भी आई एम कन्वर्टिंग इट टू बाइनरी. हमने क्या दी थी कि जो आईआर में आपके 16 बिट्स आए, जो ऐड कंप्लीट इंस्ट्रक्शन आई, उसके 12 बिट्स फ्रॉम 4 to 15 बिट्स यू कैन व्यू. आईआर रजिस्टर में फ्रॉम 4 to 15 बिट्स आपके क्या हैं? आप 4 बिट 0 1 0 से आपकी काउंटिंग स्टार्ट होती है. 0 1 0 1 2 3. From 0 to 3 bits have been assigned to OP code, and afterwards from 4 5 6 7 8 9 up to 15 bit, these bits will work as the address bits where actually in the memory the operand is being stored. कौन सा ऑपरेंड? जो हमने इनिशियलाइज स्टेटमेंट की हेल्प से दिया था. That means this 145 value has been stored in the 12-bit address part in the location which is being specified by the 12 bits of this instruction, जो कि सेम है एज 4. इस लोकेशन पर आपकी 145 वैल्यू स्टोर है. तो यू नीड टू पिक अप दैट वैल्यू. दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एड्रेस पार्ट विल बी ट्रांसफर टू एआर रजिस्टर. कौन सा एड्रेस पार्ट? इसके 12 बिट्स विल बी ट्रांसफर टू एआर रजिस्टर. 12 बिट्स पे जो आपका 12 बिट्स विल बी ट्रांसफर टू आपके एआर. यू कैन व्यू स्टेप बाय माइक्रो करके यू कैन मैच इट कि आपका देखो 12 बिट्स जो आईआर के थे वही आपके एआर के बन गए. यू कैन व्यू कि एज एंड व्हेन वी हैव क्लिक्ड ऑन दैट ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपकी आईआर की वैल्यू भी अपडेट हो गई. वही अपडेट हुई जो आईआर के 12 बिट्स थे राइट हैंड साइड में. एग्जैक्टली दोस 12 बिट्स हैव कम अप इन द एआर रजिस्टर. अब इस एआरथ लोकेशन से फ्रॉम मेमोरी फ्रॉम द सेम लोकेशन यू नीड टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ द डेटा. और वो डेटा आपका क्या है? वो डेटा आपकी 145 वैल्यू है. और वो एड्रेस क्या था? एड्रेस एग्जैक्टली यू कैन मैच कि जो ये लेफ्ट साइड में जो 12 बिट्स आए थे उसके राइट साइड में यू कैन कन्वर्ट इट टू डेसिमल. देन इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड. वही आपके जो 4 आया था उसी 4th लोकेशन से यू नीड टू पिक अप द corresponding value of data. और वो वैल्यू क्या है आपकी? 145 है. So this value will be, yes please. But in my system, AR is going for 100. It is not. That there will be some kind of error that you need to rectify. Debugging with you only, na? Better, it's not like that, na? Because you are doing of your own. Maybe some kind of the error you would have committed. So in the next time you can share your screen and we will discuss the error. Okay. Okay. Without watching at your system, I cannot locate the error. Clear? Now the data, which one is the data? 145, that is stored at 4th location, and this 4 is nothing but the address of this data, and which is being stored in AR register. From this 4th location, आपका क्या है? The data, which is what? 145 will be picked up and will be transferred to DR register. Now comes up again step by micro. आपका क्या हुआ? Now the contents of AC and DR will be added. AC में क्या पड़ा हुआ था? आपका 100 था. 100 कैसे गया था? With the help of the read statement. Another data is there now in DR register 145. Now these two values need to be added with the help of this add statement. And step by micro से क्या होगा? The result will be added and the result will be transferred to the destination register AC. AC will work as a source register as well as a destination register. Now click on step by micro. Now ultimately the value has been added and result is being transferred to the AC. So ultimately what value has come up in the AC register? 245. Now this value need to be displayed. Now what is the next statement that will work? Write statement will work. But prior to that उसके लिए fetch statement आपकी चलेगी. तो step by micro देखो फिर से fetch statement चल रही है. किसके लिए? For the write statement. Now keep on clicking on step by micro and step by micro. Ultimately the control has come to the implementation part of the write statement. And what is the function of the write statement? To display the output value. The output to be taken from the AC. Whichever is the output value stored in the AC, that value only will be displayed on your input output console. Now step by micro. Ultimately you can view that the final result has been displayed on your console, that is 245. And ultimately now the control will come to the stop statement.
Again, the fetch sequence will work for the stop statement. So you need to click on step by micro. Again, go on clicking step by micro, step by micro, step by micro, and ultimately the control has come to the implementation part of the stop statement, and the stop has been customized to halt your system, halt your program rather. So you click on step by micro, your execution will be halted this way, and ultimately this way you are being able to add two numbers. One number has been inputted from keyboard, another number you have initialized, you have stored in memory with the help of the initialization statement, and ultimately you have written the add statement in order to add these two numbers. So I think the concepts will be clear to you. Now this is the time for taking the attendance. We should go for now for the attendance now. It's already too late. Thank you, ma'am. Yes, please.